Star 1 and 2. Confirm all stations are ready for reception. Calling Star 1 and 2. Confirm your readiness. Star 1 and 2. Confirm readiness. Noted. Calling Sigma. CDDT and नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का मैं विकास स्वर्णकार इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम सभी ने इसरो के प्रमोचक रॉकेटों के बारे में सुना, देखा और जाना है, जैसे कि SLV से शुरू करते हुए ASLV, PSLV, GSLV Mark II, GSLV Mark III। आज इसरो द्वारा एक नवीन लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV का उद्घाटन प्रमोचन किया जा रहा है। इसके साथ इसरो के प्रमोचक रॉकेटों की श्रेणी में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आज 7 अगस्त 2022 को SSLV-D1 का प्रथम प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार 9:18 पर किया जाएगा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की यह प्रथम विकासशील उड़ान है। इसमें मुख्य उपग्रह के रूप में EOS-02 नामक एक भूप्रेक्षण उपग्रह है तथा आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता AzaadiSAT भी सहयात्री उपग्रह के रूप में सफर कर रहा है। A very good morning to all the viewers as we gather here to witness the maiden launch of small satellite launch vehicle SSLV. I am Madhuri and you are joining us live for the Doordarshan national coverage from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center of ISRO at Sriharikota. Apart from Doordarshan, the live telecast is also available on ISRO website, Facebook, Twitter and YouTube. The launch is scheduled to take place today, the 7th of August 2022 at 9:18 hours Indian Standard Time
from the first launch pad. The SSLV-D1 mission intends to put the prime satellite EOS-02 weighing 135 kgs in 356.2 kilometers circular orbit with an inclination of 37.21 degrees and a co-passenger satellite AzaadiSAT weighing 9.4 kgs in the same orbit. Stand by for the timer. Mark minus 30 minutes and counting. Autonomous to CDP. Autonomous confirms range real-time readiness. यान से जुड़े सारे परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। आज Met to our इस audited यान से mission जुड़े director. सभी Weather वैज्ञानिक conditions are तथा benign for अभियंताओं को SSLV-D1 इंतजार है launch कि उनके mission. अथक परिश्रम का क्या परिणाम होगा। SSLV पूर्ण परीक्षित तथा तैयार होकर प्रथम प्रमोचन मंच पर स्थित है। Roger. सभी के मन में एक रोमांच है। इस रोमांच से भरपूर हम सभी तैयार हैं इसरो के नवीन रॉकेट SSLV-D1 की उड़ान के लिए। प्रक्षेपण की उल्टी गिनती 7 घंटे पूर्व शुरू हो चुकी है। इस दौरान सभी परीक्षण पूरे किए जा रहे हैं। सभी आंकड़े प्रमोचन के लिए अनुकूल हैं। कुछ अंतिम परीक्षणों के पश्चात ऑनबोर्ड कंप्यूटर प्रथम चरण को प्रज्वलित करेगा। P1 here, go ahead, TCTC. अब हम प्रमोचन से P1 pulsar on. 28 मिनट 54 सेकंड की दूरी पर। P1 pulsar on. SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसकी क्षमता 10 से 500 केजी तक के नितभार को 500 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित करने की है। इसमें बहुत सी मुख्य बातें हैं जो इसे अन्य प्रमोचक रॉकेटों से भिन्न बनाती है। यह लघु उपग्रहों को निचली कक्षा में स्थापित करने की सबसे कम लागत तथा क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसे कम समय तथा कम लागत में तैयार किया जा सकता है। इससे इसमें वाणिज्यिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान के कार्य में निरंतर उपयोग में लाया जा सकेगा। इस यान के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी अन्य निजी संस्थानों के वहन करने योग्य स्तर पर भी आ जाएगी। ठोस नोदक प्रणाली में विकसित इस यान की अभिकल्पना में कई चुनौतियां आई। प्रभावी लागत तथा अल्प समय में तैयार की जाने वाली विश्वसनीय प्रमोचक रॉकेट बनाने की चुनौती इसमें शामिल है। Calling P4 MOTR, mobile MOTR, switch on radiation. P4 radiation on. SSLV को मुख्यतः लॉन्च ऑन डिमांड के ध्यान में रखकर बनाया गया है। SSLV की प्राथमिक विकासशील उड़ानों के पश्चात NSIL इसे भारतीय उद्योगों के द्वारा बनाए जाने पर भी विचार कर रहा है। Let's take a look at the SSLV integration activities at SDSC Shar. The launch campaign began with the flag off of the nozzle end segment of the first stage from second vehicle assembly building to the mobile service tower. The movement of middle and head end segments. The joints being open type or dry type, minimum time is taken in the assembly of all the segments on the single day. अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी खंडों को जोड़कर SS1 प्रथम चरण तैयार किया गया और अब इग्नाइटर को इसके साथ एकीकृत किया जा रहा है। यह SS2 है जो कि द्वितीय चरण है SSLV-D1 रॉकेट का।
इसे इंटर स्टेज के साथ एकीकृत कर लॉन्च पैड लाया जाएगा। The second stage along with the interstages will be moved to the launch pad. minus 25 minutes. अब द्वितीय चरण को एकीकृत कर लॉन्च पैड लाया गया है। मोबाइल सर्विस टावर में क्रेन की मदद से Service control इसे event number 120 and 121 प्रथम चरण के completed. साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। Noted. ALSA to control event number 123 completed. Roger. इन सभी गतिविधियों के दौरान पूर्ण गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। और अब आप देख पा रहे हैं तृतीय चरण SSLV का यह तृतीय चरण एकीकृत कर दिया गया। And that's the third stage. After the third stage, now you are able to watch the satellites being prepared. That is the EOS-02 satellite and the AzaadiSAT. जी हाँ, अभी आप देख पा रहे हैं EOS-02 उपग्रह तथा AzaadiSAT को एकीकृत कर ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। That's the encapsulated assembly including the velocity trimming module and the satellites being prepared. This will be moved to the launch pad and integrated with the launch vehicle. अब संयुक्त उपग्रह तथा VTM मॉड्यूल को लाकर MST में SS3 तृतीय चरण के ऊपर समायोजित कर दिया गया और इसके साथ ही SSLV पूर्णतः तैयार। Sigma to control अब event number MST 123 मोबाइल सर्विस टावर को पीछे पार्किंग एरिया पर ले जाया जा रहा है। The SSLV is fully ready for its maiden mission. विहंगम दृश्य श्रीहरिकोटा का प्रथम प्रमोचन मंच। Bird's eye view of the first launch pad. In times to come, it will witness enhanced launch frequency due to the added infrastructure. यहाँ शार में बाहरी दर्शकों के लिए एक विजिटर्स गैलरी की व्यवस्था उपलब्ध है। बहुत से लोग यहाँ आकर रॉकेट लॉन्च का आंखों देखा अनुभव लेते हैं। आज यहाँ 8,600 से ज़्यादा दर्शक यहाँ मौजूद हैं और आनंद ले रहे हैं। आप सभी दर्शकों का यहाँ फिर से स्वागत है। MC transmitting initial values. minus 22 minutes. RSD confirms data अब from हम chain 2. प्रमोचन से 21 मिनट 48 सेकंड की दूरी पर RSD confirms data from chain 1. MCC confirms data from chain 1. COT calling. इस दौरान आपको प्रमोचक रॉकेट SSLV के बारे में कुछ जानकारियां दे दें। Noted. TCTC, Char 1 and 2 confirms. यह normal प्रक्षेपण यान Siam, both SSLV telemetry carriers. 3 चरणीय यान है और इसमें तीनों चरण ठोस नोदक पर आधारित हैं। प्रथम चरण को SS1 कहते हैं। SS1 का कुल भार 87 टन के ठोस minus प्रणोद वाला 21 है। minutes. TMC can start to इसका व्यास 2 मीटर तथा लंबाई 21 मीटर की है। Systems are ready for यह चरण SSLV-D1 3 खंडों से बना हुआ है। mission launch. Recost on. में कुल recost निर्वात on प्रणोद station, 2600 changeover to किलो channel न्यूटन 2 उत्पन्न at होता T है। minus 20 minutes. Calling No control. confirmation is needed to control.
Following control CY to 127, ROD, 128. all range instrumentation systems are ready for SSLV-D1 EOS-02 launch. ROD Roger. CDP to ROD, mission computers and real-time network are ready for the launch of SSLV-D1 EOS-02 mission. ROD Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready for the launch of SSLV-D1 EOS-02 मार्च 2022 को SS1 का ROD Roger. परीक्षण कर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में This is इस vehicle परीक्षण director to को mission director. पूर्णतः सफल किया गया था SSLV-D1 launch vehicle are normal. और इसके बाद Minus SSLV यान 20 को minutes. हरी झंडी दिखा दी All गई थी stations change over to channel 2. Mission Director Roger. The launch vehicle is ready for SSLV-D1 EOS-02 mission. Mission Director Roger. All stations to note event number 130. You are able to watch on your TV screens the internal views of the launch control center and the mission control center. अभी अभी आपने सुना यान निदेशक, स्पेसक्राफ्ट निदेशक, रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अपने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है। मिशन निदेशक इन सभी तैयारियों से संतुष्ट होने पर यान के प्रमोशन के लिए अनुमोदन प्रदान करेंगे। Minus 19 minutes. Timing to control, timing confirms external hold mode. Noted. LCC1, please note timing confirmed external hold mode. LCC noted. This is spacecraft director. EOS-02 spacecraft is ready for launch. The design drivers of SSLV are low cost, low turnaround time. SSLV-D1 EOS-02 launch. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. This track TTC network is ready for supporting SSLV-D1 EOS-02 mission. Mission Director Roger. Minus 18 minutes. This is Mission Director. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of SSLV-D1 EOS-02 mission. All operation in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and ISRO network station and prevailing favorable weather condition, Mission Director hereby authorized to initiate the launch operation sequence of the launch of SSLV-D1 EOS-02 mission at 9:18 hours IST today, that is 7th August 2022. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. You have just watched the mission director Sri S.S. Vinod, This is project vehicle director director to SSLV LSC, also, based on who has authorization from authorized the mission launch director. and giving clearance Vehicle for the director hereby initiation authorizes of to automatic initiate launch the sequence. The automatic launch sequence for the launch of SSLV-D1 EOS-02 mission. We are about 16 minutes to the launch. From about 14 minutes, all the critical systems of SSLV will be verified by the onboard computers. मिशन निदेशक ने यान के प्रमोशन को अनुमोदित कर दिया है और इसके बाद यान निदेशक ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस को जारी कर चुके हैं। इस दौरान पूर्ण नियंत्रण ऑनबोर्ड कंप्यूटर के पास चला गया है। अब वह आंतरिक परीक्षण कर यान को प्रज्वलन का कमांड देगा। Minus 16 minutes. TCTC, data loggers are on The at design Dhawan and drivers of SSLV are low cost, low turnaround time, flexibility in accommodating multiple satellites, launch on demand flexibility, and minimal launch infrastructure requirement. In comparison to other launch vehicle development,
A small but agile team of SSLV project has realized the project in minimal time. The SSLV design emphasized integration and test simplicity. In the trade of launch, bigger is not always better and heavier is not always more powerful. Following PSLV, GSLV and GSLV Mark III with higher payloads, the SSLV is an effective solution for those payloads that were hitherto launched as secondary payloads on medium launch vehicles. In recent times, there is a growing need among developing countries, private corporations and universities for small satellites, which is stimulated by the demand from the commercial Earth observation and communication constellations. Small satellites either have to ride share with bigger satellites or wait for a large enough group of small satellites going to a similar orbit. This results in small satellites being placed in suboptimal orbits or waiting for launch schedules to align with larger launches, resulting in long waiting times. हम आपको प्रथम चरण के बारे में पहले ही जानकारी दे चुके हैं। SSLV का द्वितीय तथा तृतीय चरण SS2 तथा SS3 कहलाता है। यह भी ठोस नोदक वाला चरण है। -14 minutes. यह PSLV के HPS3 चरण का व्युत्पन्न चरण है। SS2 तथा SS3 क्रमशः 7.7 टन तथा 4.5 टन के ठोस नोदक वाले चरण हैं। SS2 और SS3 के पश्चात ऊपर पेलोड फेयरिंग के अंदर मल्टी पेलोड एडाप्टर है, जहां उपग्रहों को रॉकेट के साथ एकीकृत किया जाता है। इस यान में एक और मुख्य तंत्र VTM नामक वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है, जो उपग्रह को अंतःक्षेपण से पहले निश्चित गति तथा अभिवृद्धि प्रदान करेगा। इसमें 50 kg के मोनोमिथाइल हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। समय बचाने के लिए यह टैंक में फिल कर लॉन्च पैड लाए जाते हैं तथा यान के साथ एकीकृत कर दिए जाते हैं। इस यान में कम से कम लेकिन विश्वसनीय तंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंत में पेलोड फेयरिंग के एकीकृत होने के पश्चात SSLV का उत्थापन भार करीब 120 टन तथा लंबाई 34 मीटर की होती है। SSLV को बहुत ही सरल यान बनाने के लिए इसमें SSLV के सेगमेंट्स को ड्राई जॉइंट प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। यहाँ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसमें कि कई सेगमेंट्स को एक साथ कास्ट कर बनाया जाता है। -12 minutes. सभी चरणों के उत्पादन के पश्चात SSLV को सिर्फ एक सप्ताह में प्रमोशन के लिए तैयार किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए SSLV-D1 को 1 अगस्त को इसका एकीकरण शुरू किया गया था तथा आज 7 अगस्त को हम तैयार हैं इसके प्रमोशन के लिए। Speaking about the launch sequence for today's launch, the ignition of the first stage, SS1, coincides with the T0. The first stage takes the launch vehicle to an altitude of about 90 kilometers. The second stage, or the SS2, ignites at 126.7 seconds, and there is a hot separation of SS1 0.4 seconds later. Then at 132 seconds there is the separation of interstage S2C. By now the launch vehicle is at 100 kilometers altitude, so the closed loop guidance is initiated and the payload fairing separation takes place.
The second stage, that is the SS2, burns out after an action time of 119 seconds but continues to coast along with the ongoing vehicle for another 91.9 seconds and then separates. The third stage ignites at 143.5 seconds and operates for 112 seconds. The coasting phase continues for 176.5 seconds and then SS3 separates. The altitude for the satellite is almost achieved by now, and the liquid-powered velocity trimming module operates for about 20 seconds to provide the correct attitude and velocity for the satellite injection. Next comes the injection of EOS-02, the prime satellite for the mission, and then injection of AzaadiSAT, the co-passenger satellite, in the same orbit. अब हम उड़ान से 9 मिनट 27 सेकंड की दूरी पर सभी आंकड़ों का बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है। SS3 prime chain actuation completed. SSLV-D1 का फ्लाइट घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। प्रथम चरण SS1 का प्रज्वलन करीब 117 सेकंड तक चलेगा। इसके पश्चात SS2 का इग्निशन होगा और इस दौरान यान करीब 90 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका होगा। इसके बाद इंटर स्टेज का पृथकीकरण होगा। द्वितीय चरण के दौरान ही यह यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा, जिसमें वह आंतरिक जायरोमीटर तथा एक्सेलेरोमीटर की मदद से अपनी स्थिति की जानकारी ले दिशा निर्धारण करेगा। इसके बाद करीब 107 सेकंड पर यान जब 140 किलोमीटर पर होगा, इसमें पेलोड पेयरिंग ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। -8 minutes. क्रमशः SS2 का प्रज्वलन के पश्चात उसे पृथक कर लिया जाएगा तथा SS3 का प्रज्वलन होगा और अंत में VTM की मदद से कक्षीय स्थिति प्राप्त कर उपग्रह EOS-2 तथा AzaadiSAT का अंतःक्षेपण किया जाएगा। The campaign for SSLV-D1 mission has lasted for a mere 7 days. Countdown has begun this morning at 2 hours 18 minutes and has lasted for 7 hours. During this time, the batteries are charged and the checks related to the health parameters of satellite and launch vehicle are carried out. SSLV-D1 का मिशन दक्षिणी दिशा क्या है, इसलिए यहाँ शार, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर तथा यात्रागा स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस की मदद से यान को पूर्णतः अपनी दृष्टि पर रखा जाएगा। यान के सभी आंकड़े टेलीमेट्री द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिससे यान की पूरी जानकारी हमें वास्तविक समय में उपलब्ध हो रहती है। We are 3.5 minutes away from the launch. The SSLV is a 3-stage launch vehicle with all solid propulsion stages. The first stage is powered by 87 tons of HTPB-based solid propellant. It happens to be the third largest booster for ISRO after the S-200 powering the mighty GSLV Mark III as twin strap-ons and the S-139 powering the PSLV and GSLV as core booster. It is the 6 minutes. SS1 is a 3-segmented motor having dry joints among the segments. This is a feature to reduce operations time at the launch pad.
The second stage is Heritage HPS-3 motor powering the PSLV as third stage with certain adaptations. This is also a solid propellant stage. SS2 has a diameter of 2 meters and length of 3.2 meters. It has 7.7 tons of propellant loading inside a carbon fiber filament wound case. It is capable of generating maximum vacuum thrust of 235 kilonewtons. The third stage is a newly developed solid motor with 4.5 tons of HTPB based propellant loading capable of developing 160 kilonewtons maximum vacuum thrust. SS3 also is a carbon filament wound case having 1.7 meters diameter and 2.8 meters length. To ensure precise satellite injection into the intended orbit, a liquid bipropellant based velocity trimming module is used. It has monomethyl hydrazine and mixed oxides of nitrogen as fuel and oxidizer respectively. The propellant of VTM also aids in the roll control during the SS2 and SS3 flight regime and control of pitch, yaw and roll during the coasting phase. SSLV has an encapsulated assembly comprising of VTM, satellites on a variety of payload adapters ensconced in the heat shield halves. The heat shield is of ogive shape made of composite with co-cured cork thermal protection system. Overall, the SSLV is 34 meters tall, 2 meters in diameter and has a lift-off mass of about 120 tons. अब हम प्रमोशन से 3 मिनट 42 सेकंड की दूरी पर हैं. Pyro and wall battery on. Onboard computer in flight mode. SSLV का यह प्रथम प्रमोशन मुख्यतः 2 उपग्रहों को अपनी कक्षा में अंतःक्षेपित करने का है. पहला EOS-02 जो कि 135 kg का माइक्रो सैटेलाइट भूप्रेक्षण उपग्रह है और इसे मध्य रेखा से 356.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर तथा 37.21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतःक्षेपित किया जाएगा. EOS-2 के साथ एक और सहयात्री उपग्रह जिसे भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में AzaadiSAT नामक उपग्रह का भी प्रमोशन किया जा रहा है. AzaadiSAT को भी EOS-2 की ही कक्षा में स्थापित किया जाएगा. SSLV में उपग्रहों को प्रक्षेपण के पश्चात ऑर्बिट रेजिंग के प्रयोगों का भी प्रदर्शन किया जाएगा. उपग्रहों को अंतःक्षेपण में करीब 790 सेकंड का समय लगेगा. अब हम प्रमोशन से 2 मिनट की दूरी पर. The tracking of the launch vehicle during the flight is done by the ISRO Telemetry Tracking and Command Network called the ISTRAC. The SSLV-D1 EOS-02 being a southbound mission, 6 tracking stations are participating. They are Shar, Bangalore, Trivandrum, Port Blair, Singapore and Yattaragga. These tracking stations have overlapping visibility to track the flight trajectory and staging events. We are 1 minute 30 seconds from the launch. आज का मौसम यहाँ बदली वाला है. यहाँ जो दर्शकगण आए हुए हैं लॉन्च को देखने के लिए उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है. लेकिन प्रमोशन के लिए पूरी तरह अनुकूल है. -1 minute. Distract Sam. अब हम 1 मिनट की दूरी पर प्रमोशन से -50 seconds. All sequences armed.
minus 45 seconds, minus 40 seconds, minus 35 seconds, minus 30 seconds, Real-time programs activated. minus 25 seconds, minus 20 seconds, minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Normal. P1 tracking. PT tracking. R2 tracking. P2 tracking. That was a brilliant liftoff, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV-D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV-D1 EOS-02 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए। बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रथम प्रमोशन SSLV-D1 का। Maiden launch of SSLV. The performance of first stage is as per the prediction. First stage performance normal. SHAR1 as in main auto. Plus 1 minute. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। SHAR2 as in main auto. वैज्ञानिक गण निरंतर नजर बनाए हुए हैं सभी आंकड़ों पर। Flight parameters and ground trace on your screens right now. Shar, Bangalore and Trivandrum telemetry stations tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन काल करीब 117 सेकंड का होगा। This 22.5 meter long stage is powered by HTPB based solid propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2600 kilonewtons. During the SS1 action time of 117 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. प्रथम चरण के सभी तंत्र सामान्य कार्य करते हुए। Second stage ignited. First stage separated. अभी अभी आपने सुना रेंज निदेशक ने घोषणा की द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा प्रथम चरण को पृथक कर दिया गया है। As per the announcement of the Range Operations Director, the second stage has started its operation, generating maximum vacuum thrust of 235 kilonewtons. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 221 सेकंड का। ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। Trivandrum and Port Blair stations presently tracking. Plus 3 minutes. अब हम 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। There is a quick succession of several flight events. The SS1 separation, following the SS2 ignition. Second stage performance normal. And then the closed interstate separation, initiation of closed loop guidance for the flight, and of course, the dense atmosphere and 100 kilometers altitude has been crossed. The payload fairing also has been separated. यान की गति 3.35 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 228 किलोमीटर। Plus 4 minutes. इस घटनाक्रम में SS2 का प्रज्वलन काल खत्म होने के बाद करीब 90 सेकंड का कोस्ट फेज होगा।
Second stage action completed. Current altitude is Vehicle is in 260 combined kilometers. coasting. 4 hours, 4 minutes 30 seconds past the launch time. इसे SS2 SS3 कंबाइंड कोस्टिंग फेज कहा जाता है। इस घटनाक्रम में अगली घटना होगी SS2 का पृथक्करण तथा SS3 का प्रज्वलन। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Next flight event is the separation of the second stage, which has completed its operation. Second stage separated. Now we have got the confirmation that the second stage has been separated. Third stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल तथा कोस्ट फेज पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है। Right now the SSLV is in its third stage regime. The carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HTPB based solid propellant loading, SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers. A significant delta V addition takes place. It is about 3.7 kilometers per second. That's the amount of velocity increase. SS3 का प्रज्वलन काल 112 सेकंड का होगा। इस दौरान यह निर्वात प्रणोद 160 किलोन्यूटन का उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal. इस चरण के दौरान ही कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी। Plus 7 minutes. Singapore and Port Blair stations still tracking. The action time for third stage is 112 seconds, after which there will be a combined coast phase. Third stage action completed. तृतीय चरण अपना प्रज्वलन कार्य पूर्ण करता हुआ। Vehicle is in coasting. Presently it's the regime of coasting. The third stage has completed its operation but yet to separate from the ongoing launch vehicle. Control for pitch, yaw and roll being provided by the velocity trimming module thrusters. In about 3 minutes of coasting there is a triple velocity addition and triple altitude gain. VTM will then operate and compensate for the velocity necessary for the injection of satellites and also the correct altitude. भारत इस साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ में पूरे भारत में तरह तरह से इसे मनाया जा रहा है। इसमें सभी ओर विकास और उन्नति की दिशा को दिखाया जा रहा है। यह पर्व इसरो में भी मनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ मिशन न सिर्फ एक नवीन प्रमोचन यान का प्रदर्शक है बल्कि मिशन के उपग्रह आज़ादी-सैट को आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित हैं। We are 9 minutes past the launch time.
combined coasting in progress right now. यह मिशन एक और कारण से महत्वपूर्ण है। इस यान में सफर कर रहे आजादी सेट को हमारे देश के ही 750 स्कूली छात्राओं ने मिलकर बनाया है। इस तरह यह मिशन महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए वुमेन इन स्पेस के थीम को भी सहायक बन रहा है। VTM वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल व टर्मिनल चरण है जो कि अंतःक्षेपण की पूरी स्थितियां प्राप्त करेगा। Plus 10 minutes. You are watching us live from the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. This is a maiden launch of SSLV-D1 EOS-03 mission. अभी आप ऑन बोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं EOS-2 का पृथकीकरण तथा अंतःक्षेपण उसके उद्दिष्ट कक्षा में। VTM का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसे बंद किया जा चुका है। अभी उपग्रह के प्रमोशन की जानकारी आ चुकी है। EOS-2 को सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिया गया है। Following the combined coast phase, the VTM ignition cutoff and EOS-02 separation, AzaadiSAT separation, these flight events have taken place. जी हाँ, इसकी पुष्टि कर दी गई है। EOS-2 तथा AzaadiSAT को उनके उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। The outcome of the mission is yet to be announced by the Range Operations Director. मिशन की सफलता की औपचारिक घोषणा कुछ ही क्षणों में की जाएगी।
Viewers can stay tuned to the ISRO media portals to know the outcome of the mission of SSLV-D1 EOS-02 mission. Visuals from the mission control centers on your screens right now. The experts looking at their monitors very intently. आज़ादी सेट एक क्यूब सेट है जिसका भार करीब 8 केजी का है। इसमें कई सारे फेम्टो एक्सपेरिमेंट्स के लिए विभिन्न नितभार लगे हुए हैं। इन नितभारों को स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एकीकृत किया गया है। अभी तक उपग्रह से संपूर्ण संकेत नहीं आए हैं। हेलो हेलो
Good morning, all of you. The maiden flight of SSLV-D1 just now completed. The SSLV's all stages performed as expected. The first stage performed and separated. The second stage performed and separated. The third stage also performed and separated. And we had in the terminal phase of the mission, some data loss is occurring, and we are analyzing the data. And we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon. So until then, please bear with us that we are currently in the process of analyzing the data to conclude on the final outcome of the mission with respect to a stable orbit achieved or not. So please please wait and we'll come back. Thank you so much for your patient viewing of this live telecast from SDSC SHAR. Thank you so much once again.